Good morning, student. Today I am going to teach you geography second lesson. The another topics land use pattern. Okay, for the 8th class. Okay, class 8. ओके लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न बेसिक रूप से क्या देखेंगे, हमने पहले आपको पढ़ा दिया है व्हाट इज लैंड। सेकेंड हमने पढ़ाया है आपको लैंड का इम्पोर्टेंस एंड द यूज ऑफ द लैंड। हमने उसमें आपको बताया कि लैंड जो है बेसिक रूप से कितना इम्पोर्टेंस है और लैंड में का पर्पस कैसे कैसे होता है। आज टुडे वी विल लर्न अबाउट द लैंड यूज पैटर्न। लैंड का क्या यूज होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन लैंड यूज पैटर्न का जानेंगे तो कह सकते हैं आप ओके लैंड यूज पैटर्न मींस लैंड यूज पैटर्न means the varied use of land for many purpose by human being according to their needs, such as agriculture, roads, railways, forest, etc. Building, hospitals and the many purpose. ह्यूमन बीइंग अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर लैंड का वह यूटिलाइज करता है, वह यूज करता है अपने नीड्स को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह से लैंड का यूज करता है तो वह कहलाता है लैंड यूज पैटर्न। ओके, इस लैंड यूज पैटर्न को अगर अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, लैंड यूज पैटर्न जाना, अब इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं द factors which attract to the land forms to the land use pattern। लैंड यूज पैटर्न को कुछ फैक्टर्स प्रभावित करता है। वो कौन करता है अट्रैक्ट? तो पहला फर्स्ट है आपका फिजिकल फैक्टर्स और सेकेंड है ह्यूमन फैक्टर। दीज आर द फैक्टर दैट डिसाइडेड टू द लैंड यूज पैटर्न। दीज फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो फिजिकल फैक्टर्स में होगा कि फिजिकल फैक्टर्स में वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करता है। पहला है क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ सॉइल, relief. These are the physical factors that play the major role to the use of land. अगर क्लाइमेट सुटेबल है तो उस जिस तरह का क्लाइमेट है उस तरह का लैंड यूज पैटर्न होगा। अगर सुटेबल फॉर द लिविंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स है तो ह्यूमन एंड हैबिटेट यानी कि द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन दोस रीजन्स वी फाइंड मोर एंड मोर, बट द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल, द लैंड इज नॉट यूज्ड। ओके, आप अगर चले जाए तो डेजर्ट रीजन में क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल,
अगर आप मॉन्टेनियस हाई रीजन में चले जाएंगे, where we find only the ice falls and the low temperature, then we do not find the use of the lands. Okay, तो the land use जो होता है, land pattern, land का जो use होता है, that will be the attract or the affected by the different factors. These are the classified into two parts, the physical factors and the human factors. फिजिकल फैक्टर्स में क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है तो उस लैंड्स का, उस एरिया के लैंड्स का यूज जो होगा वो डिफरेंट पर्पज से होंगे। ओके, तो ये कहता है रिलीफ्स है, अगर माउंटेनियस है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस लैंड्स, दैट इज द डिपेंड्स of the land use pattern. These are the main important and the factors these attract to the land use pattern. Human factors में से है, human factors में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ज्यादा जो है ना humans responsible है for the use of land form, use of land. The first क्या है, the population density. अगर population density है तो उसका जो use of land है वो nature change हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपुल। ओके, मनुष्य की क्या उस एरिया में आवश्यकता है, दैट इज द नेसेसरी फैक्टर्स व्हिच डिसाइड टू द लैंड यूज पैटर्न। एंड अनदर है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। Okay, technological development. These are the factors that decided to the land use pattern. Okay, so there are the two important factors, the physical factors and the human factors. And physical factors, climate, availability of water, relief, types of soil, forest. Okay, these are the important that decides to the land use pattern. And the another factors, human factors, यानी human beings is responsible for the changing or for the use of the land. The population density decide to the use of land pattern, needs and our aspirations, हमारी क्या उद्देश्य है, हमारा क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार हम उस लैंड का यूज करते हैं। एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो लैंड यूज पैटर्न भी चेंज होता है। अब हम जानेंगे कि जो लैंड यूज पैटर्न होता है वो लैंड यूज पैटर्न जो है टाइम टू टाइम चेंज होता है। लैंड यूज पैटर्न जो होता है, लैंड यूज पैटर्न इज नॉट ए फिक्स्ड एक्टिविटीज, इज नॉट ए सर्टेन, is not a permanent, it is always changing time to time. What are the reasons to the changing of this? अगर देखा जाए चेंज क्यों होता है तो चेंज होने के पीछे कारण यही होता है कि हमारा जो फिजिकल फैक्टर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब लैंड यूज पैटर्न जानेंगे। लैंड यूज पैटर्न changed has been changed time to time due to the following reasons. Okay, the first जानेंगे following reasons। फर्स्ट अगर जानेंगे, फर्स्ट कॉज जो है, अगर लैंड यूज पैटर्न चेंज होता है तो वह चेंज होने के पीछे कारण क्या है, तो कारण अगर आप जानेंगे तो वो कारण फर्स्ट है, अगर आप देखेंगे तो वह है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये फर्स्ट कॉज है और इस फर्स्ट कॉज के कारण लैंड यूज पैटर्न हो गया। अगर आप ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे तो वह क्या है कि फॉरेस्ट आर cleaned into agricultural land. Okay, forest clean for the industrial purpose. Okay, तो पहले जहां हम देखते हैं लैंड का यूज फॉरेस्ट होता था, एट दिस टाइम वो एग्रीकल्चरेबल लैंड्स में है।
that is the changing forest land, जिस land का utilize forest में होता था, अब now that is the change into agricultural land, और वो जो forest होता था, that is time that is the clean due to the industrial purpose, industrial purpose के लिए उसको clean कर दिया गया है, तो इस वजह से हमारा growth of the population उसके requirement के लिए, उसके food requirement के लिए बड़े पैमाने पर forest को clean किया गया है और वो convert हो गया agricultural land. Second कहता है हमारा technological development. Okay, in modern age आप क्या देखो, in modern age we use many technology to the exploitation of nature, by which we change to the land use pattern. आप इसके एग्जाम्पल देखोगे तो अगर आप देखो तो प्लेटिव रीजन बेसिक रूप से प्लेटिव रीजन है, but we find the minerals and we excavated to the minerals from the plateau region. उस प्लेटिव रीजन से हम बड़े पैमाने पर क्या निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, और मिनरल्स निकालने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता तो हम उस प्लेटिव रीजन से हम मिनरल्स नहीं निकालते. सेकेंडली देखो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण वी फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डैम्स ऑन ओवर द रिवर एंड देन वी एक्सकेवेटेड, वी exploited to the water of the rivers for the many purpose or the multi purpose. Okay, तो डैम्स जो है वो उसका फॉर्मेशन ओवर द रिवर ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता तो हम उस रिवर के वाटर का यूटिलाइज नहीं करते, और जब वाटर का यूटिलाइज करते हैं तो देन वी कंस्ट्रक्टेड द लोड ऑफ द कैनल्स ऑन दिस द डैम एंड many unirrigated land convert into the irrigated land. अब बहुत से ऐसा irrigated land, unirrigated land है जो agricultural नहीं है, barren lands है, अब उस vegetable land और barren land को at this time we convert into the agricultural land due to the development of the irrigation systems through the technological development. Okay, so the land use pattern has been changed time to time. It is not the permanently. अगर उसका यूटिलाइज होता है वो यूटिलाइज कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है. आप अपने आसपास, घर के आसपास सराउंडिंग एरिया में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे the lands which were the used as the agricultural lands, but at this time that land convert into the houses, buildings and the shopping complex are the formed. Why? What are the reasons? The due to the urbanization, the growth of the population, population के growth होने की वजह से लोगों को रहने के लिए आवास चाहिए, inhabited चाहिए, और वो लोग बेसिक रूप से agricultural lands को acquire करते जा रहे हैं, and that agricultural land convert into the unagricultural lands, and many buildings, houses, cinema halls, roadways, railways, and these are the constructed over this the land, and the land use pattern change through this way. Okay, so we can say that the land use pattern is not the permanently process. It is the changing time to time through the different causes. The two important causes of one of them are the most important. आप थर्ड भी लिख सकते हो. थर्ड कॉजेज क्या हो जाएंगे, हम थर्ड भी बता दे रहे हैं. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, आप थर्ड कर लो. अब थर्ड का क्या होगा, तो थर्ड होगा अर्बनाइजेशन होगा या क्लाइमेटिकल चेंज होगा. नहीं, थर्ड है क्लाइमेटिकल चेंजिंग. ओके, क्लाइमेट as a changing atmospheric condition. Climate is a changing of atmospheric condition which is change time to time through the human or the natural regions, natural causes. Okay, that
attract to the changing to the land use pattern. ओके, टाइम टू टाइम चेंज होता है और लैंड यूज पैटर्न को क्या करता है, वह चेंज कर देता है. सच एज desert region was agriculturable land before 4,000 years, but at this time it is not suitable for agriculture. Why agriculture? Due to changing of climate. Okay, urbanization is also, these are the important factor. बहुत पहले आप देखोगे डेली हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो हड़प्पा पीरियड में आप देखोगे कि हड़प्पा पीरियड में जो आपका रीजन्स था, जो रीजन्स है, जो राजस्थान रीजन्स है, वो राजस्थान बेसिक रूप से वो जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड था, लेकिन आजकल वो डेजर्ट में कन्वर्ट है. व्हाई? द चेंजिंग ऑफ द क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से यूज जो होता है, लैंड यूज पैटर्न भी वो चेंज होते चला जाता है. अगर मान लो जिस रीजन में फॉरेस्ट ज्यादा हो और उस रीजन में फॉरेस्ट हो और अचानक वहां पर क्लाइमेटिकल चेंज होगा तो वो फॉरेस्ट रीजन कन्वर्ट हो जाएगा वो डेजर्ट रीजन में या एनी अनदर रीजन में. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और द कॉजेज बाय व्हिच वी find the changing of the land use pattern. Okay, and now the next topic we will study about this land use pattern. Now I am going to make a table to the land use pattern of the world and the India. Okay, and then that is help to your study कि what are the conditions of the world say the land use pattern. एक टेबल बनाएंगे यहाँ, टेबल ओके 2 लिशन का 1 है. ओके, पहला है नेम ऑफ कंट्री. ओके, नेम ऑफ कंट्री है. लैंड यूज जो पैटर्न होता है उसमें से देखेंगे कौन कौन लैंड यूज पैटर्न होता है. तो पहला यूज होता है एग्रीकल्चर. पहला क्या होता है इसका यूज? एग्रीकल्चर. दूसरा होता है इसका फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज द बेस्ट वे टू द यूज ऑफ द लैंड. तीसरा होता है पास्चर. ओके, पास्चर यानी चारागाह के रूप में. और थर्ड होता है अदर यानी अनएग्रीकल्चरेबल एग्रीकल्चरेबल. ओके, अब इसमें से हम पहले सबसे फर्स्ट देखेंगे वह है चाइना. चाइना में अगर आप देखेंगे तो वहां एग्रीकल्चरेबल लैंड्स 10% है. ओके, चाइना में एग्रीकल्चरेबल लैंड्स 10% है एंड फॉरेस्ट 14% है एंड 34% आपका पास्चर एरिया है एंड 42% जो है आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसका ह्यूमन डिफरेंट पर्पस से यूज करता है. यानी रोडवेज है, रेलवेज है, अर्बन रीजन है, इंडस्ट्रीज है, इस सभी में ये 42% आते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट चाइना के बाद आता है कनाडा. ओके, कनाडा अगर रीजन को देखेंगे तो देन वी फाइंड ओनली 5% एग्रीकल्चरेबल लैंड इन दिस स्टेट, इन दिस कंट्री. ओके, नेक्स्ट 35% एरिया ऑफ द कनाडा कवर्ड विद द फॉरेस्ट. वहां पर 35% है, सॉरी 39%. एंड नेक्स्ट है वह 4% है पास्चर लैंड and the 52% area is unagriculturable land. ये आप कह सकते हैं आप अदर यूजेस पे आते हैं. आप कनाडा के बाद अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट द लार्ज कंट्री यूएसए. यूएसए इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज ओनली 21% एग्रीकल्चरेबल एरिया. मात्र खेती करने वाली जो भूमि है कनाडा में, अमेरिका में, वो 21%, 21% एरिया है एंड 32% एरिया इज फॉरेस्ट and 26% area is the pasture land and only 21% area that is the used and the different purpose.
such as the industrial region, railways, roadways and the multiplexes. ओके यूएसए के बाद अगर हम देखेंगे तो यूके है, यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, इसको सामान्य रूप से हम इंग्लैंड भी बोलते हैं। ओके इंग्लैंड बोलते हैं। यूके का अगर देखेंगे तो यहाँ 29% एग्रीकल्चर एरिया है एंड 10% फॉरेस्ट है और नेक्स्ट 46% आपका पास्चर लैंड है। इंग्लैंड में पास्चर लैंड का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है एंड सेकेंड 16% एरिया आर यूज्ड बाय द इंग्लिश पीपल्स for the many other purpose than the agriculture, forest and the pasture land. And third है ये our ब्राजील। ओके ब्राजील को अगर आप देखेंगे तो ब्राजील is also the largest country in the South America continent where we find 57% agriculture, or sorry 9% agriculture area and 66% फॉरेस्ट। ब्राजील अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अमेज़न रीजन है और इसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन अभी जो है 66% जो है वो फॉरेस्ट है, 20% पास्चर लैंड है और 5% जो है वह अदर पर्पस में यूज होता है। एंड नाउ द लास्ट बुक we make a table for our nation, our country, India का अगर एग्रीकल्चरेबल लैंड देखेंगे तो there is the 57%, यानी कि more than 50% area of our country is agriculturable land. So India is a agriculturable country. India is a country of agriculture. भारत को कृषि देश कहा जाता है। The prime activity of our nation is the agriculture. Why? Due to the 57, yani more than 50% area of our nation is agriculturable land. Okay, and the maximum proportion of our nation is used for the cultivation, for the productions of the crops and the vegetables. Okay, then 57%. Okay, and the 22% area of our nation is forest. And next 4% area is pasture land and 17% area of our nation is other activities or the other use. These are the tables that explain the use of the land pattern in the different country. There are the 7 countries, I think 6 countries: China, Canada, USA, UK, Brazil and India. These are the most important country of the world and the last country of the world, and explained by these the topics, and every topics explain about this country that the land use pattern in this country. Okay, now the some questions has been arises on this table. Okay, अब इस पर आप कुछ questions नोट कर लेंगे। जो आपका क्वेश्चन बेसिक रूप से क्या होगा, तो क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट होगा जिसको आपको बना करके आप उस क्वेश्चन को स्कूल कैंपस में जमा करें। आप कॉपी में बना ले, आप जो है डायरी में कर ले और उसको करके आप स्कूल में जमा कीजिए जिसको चेक किया जाएगा। तो क्वेश्चन आप देखेंगे होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन होगा वो आप देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न। ओके, सेकेंड क्वेश्चन होगा नेम द फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट टू द लैंड यूज पैटर्न। ओके, लैंड यूज पैटर्न को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को लिखना होगा। लैंड यूज पैटर्न has been changed time to time explain with the example। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे तो हमने एक टेबल बनाया है, अब उस टेबल बेस्ड क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, अब टेबल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा? टेबल बेस्ड क्वेश्चन। Question 1, which country
has maximum area under the agriculturable land. Okay, second question है, which country has minimum area under the agriculturable land. Okay, next question है, which country has maximum area of pasture land. And now another question is, which country has minimum area under pasture land. Now question number 5, which country has maximum area under the forest. And now question number 6, which country has minimum area under the forest. Okay, these are the question from the table. इस टेबल को आप स्टडी करेंगे and then the make this question. And now we make a diagram about the land use pattern of our nation. Okay, अब अपने नेशन के बारे में पढ़ लेंगे. नेशन में क्या क्या यूटिलाइज होता है. Land use pattern in India. Land use pattern in India. According to the India government, the land use pattern of our nation is in the following ways. Okay, first, need zone area. यानी the land which cultivated every year. Okay, that is 46% area of our nation. Our nation is under the need zone area. Okay, second है gross cropped area. It means GCA, NSA. Okay, these are the short form of this. Okay, and now we study about this. Second, net zone gross cropped area, yani the agriculturable land which cultivated more than
more than owns in a year, एक साल में अगर एक बार से अधिक एग्रीकल्चर किया जाता है किसी लैंड पे तो उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है, दैट इज द एडेड विद द नेट सॉन एरिया। एक एग्रीकल्चरल लैंड को एक बार यूज किया जाता है, अगर उसी एग्रीकल्चरल लैंड का दोबारा यूज किया जाता है एक साल में, जैसे हमने उस पे एक लैंड पे हमने वीट का खेती किया और अगले उसी सीजन में हम उसी वीट पे हम दूसरा खेती कर रहे हैं, पैडी का कर रहे हैं, तो उसको हमने 2 टर्म्स यूज किया तो 1 ईयर, तो वो जो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है दैट विल बी द इंक्लूडेड विद द नेट सॉन एरिया एंड दिस इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप एरिया। ये हमारे यहाँ जो एरिया है 15%, ओके, 15% एरिया अंडर द GCA, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में 15% ऑफ आवर नेशन, 15% क्षेत्र हमारा जो है वह ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में आता है, ओके। एंड थर्ड पढ़ेंगे फॉरेस्ट। थर्ड है फॉरेस्ट, लैंड यूज पैटर्न में पढ़ेंगे फॉरेस्ट। 22.5% area of our nation is covered with the forest, हमारा फॉरेस्ट से ढका हुआ है। As we know, जैसा हम जानते हैं कितना चाहिए 33% area should be covered, होना चाहिए, should be covered with forest for ecological balance के लिए 33% एरिया शुड बी कवर्ड, इतना कम से कम एरिया हमारा होना चाहिए किसके लिए, हमारा इकोनॉमिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए कम से कम 33% एरिया होना चाहिए, लेकिन भारत में 22.5% एरिया है, ओके। एंड नेक्स्ट थर्ड पास्चर लैंड, ओ सॉरी फोर्थ पास्चर लैंड। पास्चर लैंड means the land which are used for the grazing of animal, okay। 7% area of our country under this land use, okay। नेक्स्ट आता है फिफ्थ cultivable wasteland। Cultivable wasteland means the land which became uncultivated due to high use of agriculture, ओके। जब ज्यादा एग्रीकल्चर का यूज करेंगे तो वो लैंड अनकन्वर्टेड हो जाता है, उस पे एग्रीकल्चर लायक नहीं रह पाता है। जैसे हम ओवर इरिगेशन कर लिया, ओवर फर्टिलाइजर यूज कर लिया, तो वो एग्रीकल्चरेबल लैंड रस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। अतः वो 4-5 साल तक हम उससे एग्रीकल्चरेबल लैंड पर खेती नहीं करते हैं, तो वो कल्टिवेबल एज वेस्टलैंड कहलाता है। 6.5% एरिया इज कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ओके, वेस्टलैंड। And now fifth or the sixth important land use pattern of our nation is non-cultivated land, not available for cultivation, uncultivated land। It means ये sixth है, the land which are not used in agriculturable which are not used in agriculturable purpose
These are used in other purpose. Okay, 15% area of our nation is uncultivated land. Uncultivated land. That means not available for agriculture. Okay, these are the land use pattern of our nation. आपने देखा, हमने 6 आपको बताया, 6 पॉइंट्स में बताया कि इंडिया की जो लैंड है उस लैंड यूज का पैटर्न हमने 6 भाग में बताया. नीट सोन एरिया बताया, ग्रास क्रॉप्ड एरिया बताया, और उसके बाद आपको बताया पास्चर लैंड बताया, फॉरेस्ट बताया, अनकल्टिवेटेड लैंड बताया, और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड बताया. These are the 6 way by which we use of our land. Okay, and these are the cultivated, these are the changes time to time, these are not the facts. हमने पहले ही बताया है. तो ये हमारा इंडिया का जो है बेसिक रूप से लैंड यूज पैटर्न है. नाउ द नेक्स्ट क्लासेस वी लर्न अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लैंड. ओके, लैंड का कंजर्वेशन हमें कैसे करना चाहिए नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. अगर आपको इसमें पढ़ने में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रहा है तो देन यू रिंग ऑन दिस मोबाइल नंबर 9470055004. ओके, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू.